Hello guys, welcome back to Algorina. So yeah, it's day 14 solving Codeforces genuine pattern wise questions. Okay, so yeah, welcome back. So today we are solving the X-pin walling problem first, then X-pin walling problem, and then we'll pick this second problem, right? So yeah, without wasting any time, let's start. Okay, so let's go step by step. I'll read the question, then I'll show you my approach, and finally we'll dry run the code together. Okay. Let's read this question. Alright, it's about the paints. You have the two separate colors, black and white. Okay, the words on the results as sticky zones. Okay, so in this problem, like bowling pins are arranged in the triangle. Okay, it's all pins are arranged in a triangle shape, and if the side is four, then the total pins is like if the sides this one, two, three, four. If the side is four, then the total pins is 1 plus 2 plus 3 plus 4, right? Is 10. And what if the side is 6? If the side is 6, then the total pins is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6. The sum of the total pins, right? So in general, for the side length k, the total pins should be for the side pins k, the total length should be k into k plus 1 upon 2, right? K into, sorry, my writing is bad, I know, k into k plus 1 upon 2 for the k pins. K for the if the side length is k, then the pins count is total k is equal k into k plus 1 upon 2, right? Okay, okay, so we just solved the first thing, the total number of pins, count the total number of pins. So yeah, the twist is that we are given two types of pins, white and black, right? uh, we have W white pins and B black pins. So the rule is that each row must be all one color, but we don't care, okay, which row in which. Okay, only that one row is not mixed. There is only one row that is not mixed, okay. So our job is that to find the largest possible K such that we can build a full triangle frame. Okay, it's an interesting question, right? इवन थोड़ा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी लाइक बॉलिंग सबने की हुई है, ऑलमोस्ट सबने की हुई है मतलब, तो वी नो अबाउट दैट. इसका अप्रोच क्या हो सकता है, लाइक द टोटल पिंस वी हैव व्हाट, W plus B, राइट, एंड फॉर अ ट्रायंगल ऑफ साइज K देन वी नीड K साइज का ट्रायंगल बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए थी, जितने अभी देखा था हमने, K इंटू के प्लस 1/2, और हमारे पास टोटल पिंस कितनी है, W plus B. So the largest possible K is the maximum one where K into K plus 1, K into K plus 1 is upon 2 is less than equal what, W plus B. Exactly, right. Like just think about, सोचो एक बार वापस से कि हमारे पास टोटल पिंस कितनी है, W plus B, और हमें क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है साइज K का. सो साइज K का ट्रायंगल बनाने के लिए कितनी पिंस होनी चाहिए, K into K plus 1/2, राइट. और हमारे पास टोटल पिंस कितनी है, ये है. So the largest possible K is the maximum one where K into K plus 1/2 is less than equal W plus B. ठीक है. Alright, so let's start the code. काफ़ी कुछ समझ में आया है अप्रोच से. So just without wasting any time, let's just start the coding. Alright, it's day 13. It's day 14. Sorry, it's day 14. Let's start. क्वेश्चन जेन्युइन में अच्छा है.
We already declared the long as long L double L, right? So yeah, first we'll just take a input. मैंने कुछ मिस तो नहीं किया ना क्वेश्चन में? जितना मुझे दिख रहा है I didn't miss anything. For the constraint size, that there is a 10 given on 9, right? So let's just declare कर देते हैं पहले. Not LL, LL. The 5 no, 5. Let's start the code. First I'll just take input as rituals. First I'll write the code and then I'll explain the each line of code and then we'll write on the question again. Okay, so don't worry, let me write the code first. Right, so it's till there, and let's just increment it, and there will be condition if j into j plus 1 upon 2 is greater than or then break it, right? Just break it, else answer, let me declare the answer is j. True, सही है ना? Then after this loop, let's just see out answer. But did I miss something? Maybe, maybe. Maybe sorry. This A comes inside the for loop, and same goes with it. Right. Let's run. Let's first check the answer and then I'll explain if it's totally correct. What's the 2 2 3 4 then 2 2 3 4? Yeah, it's correct. Okay, so it's time to first let's just submit the question. First let's check कि actual में पूरा work कर भी रहा है या नहीं. और ये जब तक वो हो रहा है तब तक हम एक बार वो समझ लेते हैं. हो गया. So yeah, it's accepted. So yeah, let's just understand the code. What I write it. First, I just take an input that has number of test cases. Let me open the question. Alright, first I'll just take the input t test cases. Then for each test case, I read w and b, and I calculate the count w plus v as we already said here, right? Then I loop j from 1 upwards, and if j into j plus 1 upon 2, like it's the same formula we use here for the k length. Like I used k into k plus 1 upon 2, and like here for the loop wise I'll just use the j to j plus 1. This is there the logic is same. Otherwise I update the j.
ठीक है. If j into j plus 1 upon 2 exceed total pins, then I just break it, and otherwise I'll just assign it, update it the j. Like finally I print the answer. So basically the loop just finds the largest triangular number that fits into w plus b. See, okay, एक बार ड्राई रन करके देख लेता. एक एक बार ड्राई रन करके देख लेते. क्वेश्चन अच्छा है सच में. सो ओके, लेट्स सी कि वी हैव, यही करके देख लेते हैं 3 2 वाला. ओके, लेट्स सी हमारे पास 3 white balls हैं and just we have 2 black balls. So the total pins is 5. So for j is equal 1, 1 into 2 upon 2 is equal, for j is equal to 1, 1, फिर जो j is equal 1, जो फर्स्ट टेस्ट केस हमारा चलेगा 1 से लेके स्टार्टिंग वाला, उस पर क्या होगा, लाइक 1 इंटू 2. सॉरी यार, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी ऐसी है. मेरे को माउस से एक्चुअली मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है. 1 इंटू 2 के अपॉन 2 इज इक्वल कितना हो गया, 1, एंड 1 इज लेस देन इक्वल 5. सो द आंसर इज 5. तो सॉरी 1, राइट. एंड सेम ऐसे ही बाकी के फॉर द टेस्ट केस 2. दैट्स इट. Let me clear it. So for the j, when j is equal to 2, 2 into 3 upon 2 is equal to 3 is less than equal 5, then answer is 2. And the same is for if j is equal to 3, then 3 into 4 upon 2 is equal 6, and 6 is greater than 5. So in that case, if it is greater than 5, then I'll just break it, right? So the idea is simple, just calculate the largest triangular number that doesn't exceed the total pins, and that gives you the maximum side of length k. This loop method is straightforward for beginners especially. Okay, that's why I just choose it and like write it. Okay, so yeah, let's move forward to the next question without wasting time. Let's move forward. Prefix some edicts. Okay, prefix some edicts. Suppose like ये बहुत mathematical question है, so I can't that much explain, और like मैं वीडियो लेंथी करना नहीं चाहता. अगर आपको डिटेल में समझना है तो बता देना, मैं इस क्वेश्चन को वापस डिटेल एक्सप्लेनेशन में एक वीडियो बना दूंगा. ठीक है, ये मेरा डेली प्रैक्टिस है, तो मैं जस्ट अपने पेन पेपर पर ड्राई रन कर लूँगा इसको क्विकली, सो आई कांट एक्सप्लेन दैट मच. Suppose in the software integer sequence and that's the same whatever like, okay, I have to give that translation, okay, the formally given as okay, just gives confirm the teacher okay. Mm-hmm. It's again a boolean kind of question, but it's just with the quotes. It's all one. Okay. Okay. Like थोड़ा मैथमेटिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है ये, मतलब थोड़ा डीप में मैथमेटिक्स काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बट चीज़ें वही है, सिंपल है. जो जो एग्जैक्ट उन्होंने सब चीज़ें डिटेल में दे रखी है क्वेश्चन में, देन वी हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग्स, check the requirements and just make the story and just code it. That is a simple process for me actually, and especially for me, I'm not talking about the whole. You have to practice a lot of questions kind of this or like mathematics related things. तब जाके ऐसी कमांड बनती है कि लाइक आप क्वेश्चन रीड करके आपके दिमाग में लॉजिक हिट्स होता है कि now we have to do this, now we have to do this, or like we can do this, that thing, we use that thing. It requires a lot of practice. Okay, so let's start the code. CVB.
सोच रहा हूँ अपने आगे की वीडियोस में जावा भी यूज़ करूँ, लाइक जावा में कोड करना। बट मैं सोच रहा हूँ कि जब DSA सीरीज चालू करेंगे तब जावा में कोड करना इज़ बेटर कंपेयर टू दिस कोड फोर्सेस में। मैंने किया हुआ है पहले, मुझे पता है थोड़ा सा। cd comma and then I'll just take input here, right here correctly. And just take it, just take it as input. So input. Then I'll just use okay, vector kind of vector, and I'll just use it v, and the size is okay, right? Then I'll just declare another thing is 0, and for the auto and sets where you take input of x comma p x, right? And I'll just there is a function that named exchange in the p in C++, sorry. I'll just exchange the value from x to x minus p here. Okay, then I'll just see out what, then I'll just see out if k is equal to 1 and sorry, or and vi, if the starting of vi is less than vi of 1, right? Is the less than vi of 1 into, and there's another case is we have to n minus k plus 1, right? If it is not only this actually, yeah, it's a, if it is, then we'll just print yes, and just use slash n, otherwise we'll just print no with the slash n, right? आई थिंक मैंने मैंने कुछ मिस कर दिया, लाइक मेरे को लगा मैंने कुछ एक कंडीशन मिस कर दी. Okay, let's first try run this. You can, okay, let's use this one. 5k. Okay, the bi of 1 is right. So there's 9. It's less than equal. First of all, it's less than equal, and it's not only the one. I'll choose use it in the large variable because the test cases constraints are high. Okay, so I'll use this large. It's used, and oh, I think कुछ गलत देगा ये आंसर शायद. लेट्स एक बार चेक करते हैं कि क्या गलत आंसर दे रहा है, एक बार देखते हैं. यस यस नो नो, यस यस नो नो. आंसर तो सही दिया है इसने, लेकिन जो एक डाउट है मेरे मन में अभी भी, व्हाट इफ द इट्स आई थिंक वी हैव टू we have to sort this. We have to sort these thing all. मैं इसी में डायरेक्ट सॉर्टिंग कर दे रहा हूँ इसकी वेक्टर की, एंड वेक्टर की सॉर्टिंग अगर है, वेक्टर सॉर्टेड है, एंड देन फिर हम ये ऑपरेशन यूज़ करेंगे. ठीक है, सो आई विल जस्ट यूज दिस. ओके, लेट्स जस्ट कवर इट with the tool one, and yeah, here we'll just use is sorted. Is there any sorted? It's sorted. Come on, it's sorted. Yeah, it's sorted. Vi dot begin, comma,
not comma plus 1 comma vi dot and right. And for this I'll use and if both conditions match perfectly, then and only it will go and check. Right. Let's just now read on this. Yes, yes, no, no. Let me first try on the other example. Like let me try on this. Right, 3 3 and then 4 4 3 2 2 3 4. It's just sorted. Text changed already. And if K and then K, okay. Yeah, maybe it's correct. Maybe it's correct, completely correct. Let me let try to submit it. Let's try to submit. ये क्वेश्चन भी अच्छा था एंड ये क्वेश्चन भी थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप ऑफ ज़्यादा चला गया था, थोड़ा ग्रीडी और वो इम्प्लीमेंटेशन वाली चीज़, लेकिन क्वेश्चन अच्छा था. एंड आई एम श्योर कि ये बिना सॉर्टेड किए नहीं चलता. लाइक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो पक्का या तो टीएल ही दे देता या फिर कुछ और. कम ऑन. कम ऑन. कम ऑन डू. 75 टेस्ट केसेस. ओ माय गॉड. गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. अब आगे हम लोग रेगुलरली वीडियोस लेके आएंगे. मैं पूरा ट्राई करूँगा कि रेगुलरली वीडियोस बनाऊँ. थोड़ा ऑफिस वर्क भी होता है लाइक अदर थिंग्स टू, तो थोड़ा सा कभी कभी रह जाता है. बट आई विल मेक श्योर कि मैं आगे थोड़ा कंटिन्यूस वीडियोस बनाऊँगा. एंड या आगे कुछ और भी चीज़ें करेंगे हम. लाइक जैसे कि थोड़ा सा कमांड्स के ऊपर हो जाए रेगुलर में एक्सेप्टेड. तो जब ये इस पर थोड़ा कमांड हो जाएगा देन वील स्टार्ट सम गुड DSA CP शीट्स. ठीक है, जो शीट मैंने बता रखी है वो भी करेंगे फॉलो, लेकिन उसके लिए मैंने थोड़ा देखा कि लाइक प्री साइड में थोड़ा सा इन क्वेश्चंस के ऊपर कमांड अच्छी होनी चाहिए, लाइक बेसिक थोड़े से स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और वी कैन से दैट थोड़े ब्रशअप हो जानी चाहिए चीज़ें. देन वी कैन वील स्टार्ट दैट. ओके. तो कुछ इसके बाद कुछ जैसे शीट्स भी करेंगे रेगुलर में, और जो आप लोग कुछ कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस वगैरह बताओगे तो उसके भी अप्रोचेस में डालूंगा. फ्रॉम ब्रूट फोर्स, क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं, क्वेश्चन को समझते कैसे हैं, देन कैसे सोचे कि कौन कौन सी अप्रोचेस में लग सकती है. लाइक देयर आर मैनी डेटा स्ट्रक्चर्स, तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद कैसे दिमाग में आएगा कि कौन कौन सा डेटा स्ट्रक्चर में लगा सकता है. बिगनर्स के साथ प्रॉब्लम आती है बेसिकली. सो क्वेश्चन पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना है, कैसे यूज़ हो सकता है. देन जस्ट ब्रूट फोर्स से लेके ऑप्टिमाइज तक सारी चीज़ें को डिस्कस करना, अप्रोचेस को, एंड देन कोड करना. फिर देखना कि क्यों ब्रूट फोर्स यहाँ पे वर्क नहीं किया. देन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह, तो पूरा डिटेल एक एक क्वेश्चन दो दो क्वेश्चन करेंगे, लेकिन करेंगे डिटेल में. सो दैट कि तुम्हें पता चले कि इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है अगर इंटरव्यू तुम्हें क्वेश्चन देता है. और लाइक कॉन्टेस्ट प्रोग्राम में तुम्हें कैसे क्वेश्चन करने हैं, ओएस में कैसे क्वेश्चन करने हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बेसिकली नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने से नहीं आती है. तो हर एक क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो, कैसे उसको सॉल्व कर रहे हो, कैसे सोच रहे हो, उससे आती है. राइट. सो या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. एंड रोज़ाना कुछ ना कुछ ऐसे नए नए क्वेश्चंस करेंगे अच्छे अच्छे. आगे जाके और भी चीज़ें करेंगे, लो लेवल डिजाइन वगैरह भी, डिजाइनिंग भी देखूंगा. या थैंक यू.